So, good morning, students. This is the last topic of our first chapter, communication. Topic is visual communication. So, first is what is visual communication. So, in this communication, the transmission or sending the message with the help of symbols or images or videos. Yes, means in this communication, the sending of message with the help of symbols. So this is called the visual communication. Means you have to see something, some like sign, a drawing, or a graphic designing. Yes, some advertising or some animations. They are something which you can see and understand the problem. So that communication is known as the visual communication. Yes. So let us start in the book. Imagine that you are on a vacation in a foreign country and you are lost. Well, during the site at home, you could stop and ask for direction, but here you do not know their language well. Yes, at home, you could stop something and say something. Yes, भाई साहब collectorate जाना है, कहाँ से जा सकते हैं? Yes, but in other country you do not know the language well, so you cannot even ask for the directions. So the best and the most trustworthy option would be using a map or landmark. Yes, a Google map, like that, familiar signs, etc., to find your way back to your home. So this is a process. This is a process or an example of visual communication. What type of visual communication is going on? Then there is a definition of visual communication. Visual communication is the transmission of ideas and information with the help of symbols and imageries. Imagery means this something, images. Yes, it is one of the three main types of communication and is believed to be the type that people rely on the most. Means this is the only type in between the three. Three means what? The verbal, the non-verbal, and the visual. So in between threes, this is the most reliable. This is the most reliable communication. Yes, which the pupil believes. It includes sign, drawing, graphics designs, illustrations, advertising, animation, colors, and electronic resources. It is very important in business world. This communication is very most important in the business world. The ability of human being to receive, view, and process images and the selling point of this communication. Means in this communication, the human being receives some messages with the form of images or videos. Clear? It helps in creating a market and building a brand for the product. ये प्रोडक्ट के लिए क्या करता है? एक ब्रांड बनाता है और एक मार्केट क्रिएट करता है उस प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए. क्लियर? So this is the visual communication. Inside the type of visual aids means example of visual communication. What are the examples? Like films, objects, pictures, maps, chart and graphics. Yes, PowerPoint presentation, and like that we also doing some video to you. Yes, this is the video. This is a video communication in between us. So this is also called a visual communication in between us. Okay, so these are the examples of visual communications, types of visual aids. Clear? The next, the advantages of visual communication. So there are many advantages of visual communication. Like it इस कम्युनिकेशन में आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. यस, किसी को आपको टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझाना है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. जो अभी हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वो क्या है? मर्जर है ऑडियो एंड वीडियो का. आपको वीडियो भी दिख रही है यहाँ पर, में ऑडियो भी आपको आ रहा है. तो दिस इज द मिक्सिंग ऑफ ऑडियो एंड वीडियो communication. Yes, so the first point is it helps in emphasizing the oral communication. Emphasizing means to having some pressure on a particular subject or a particular topic. Yes, or a perfect meaning for emphasize is what? Stress. Yes, giving some stress on any particular word.
So this is called emphasizing the it helps in emphasizing the oral communication. Means ये oral communication को बढ़ाने का वर्क करता है. Emphasizing स्ट्रेस डालता है. When an individual is explaining some business offers, कोई individual है वो आपको business offers को explain कर रहा है, it is always important to use demonstration for better understanding. जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे better understanding के लिए मुझे visuals जरूरी है, तो मैं आपको ये visual दिखा रहा हूँ. क्लियर? तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी. आपकी बुक आपको सामने दिख रही है, so this is much better than the only audio communications. Yes, so this is better than a simple audio. Yes, so in the business offers there is also must the combination of audio and video. So it's always important to use demonstration for better understanding. While giving presentations, visual aids can help in explaining the key features of the organizations or the product. मीन्स अगर मैं आपको विजुअल एड्स दिखा रहा हूँ तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, की फीचर्स को भी मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट जो और भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी मैं एम्फेसाइज कर सकता हूँ आपके सामने या उनको पॉइंट आउट कर सकता हूँ. यस, so this is one advantage. And the second, a combination of audio visual communication is more effective than words. Yes, like we are doing the communication audio and visual mode. Yes, so this is the combination of audio and visual. It is more effective than only the words. Yes, some facts cannot be delivered through words. Some facts cannot be delivered through words. Thus diagrams and pictures are used. So there may be used some diagrams, pictures, images, graphs, maps and flowcharts are self-explanatory visuals aids that can explain the progress, disparities. Yes, disparities means some differences. Yes, उनके बीच में क्या difference है. Disparities means difference, तो उनके बीच में क्या difference है. Performance, statistics etc. is a more impactful manner. मतलब अगर मैं किसी ऑडियो विजुअल का यूज़ करूँगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा नॉर्मल ऑडियो मोड से. यस, सो सिंपल एडवांटेज इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन वर्ड. सो यू जस्ट फिनिश इन वन लाइन. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट only single line. Yes, so you can write only the single line also. If you want some explanation, then read the following 3 lines. Yes, so the next third advantage, it is very effective on pupils who may not have the ability to read. This is a most important example of visual aids. Yes, it is very effective on the pupil who may not have ability to read but have the visual ability to comprehend. बट उसके पास वो एबिलिटी है कि वो उसको समझ सकता है पर रीड नहीं कर सकता है. सो दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल. द नेक्स्ट लास्ट, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन इन अंडरस्टैंडिंग विजुअल कम्युनिकेशन इज लेस एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. सो सिंपल लैंग्वेज में है, वेर इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस क्विकली, पीपल कैन मेक क्विक एंड करेक्ट डिसीजंस. यस, इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट और क्विकली मिल रही है तो आप उसका डिसीजन भी करेक्ट क्विकली ले सकते हैं. There were some disadvantages also. Yes, every phase have some pros and cons, so some disadvantages are also there. The first one is, the main disadvantage of visual communication is that it is expensive. Yes, obviously this is expensive because you have some much more resources to communicate. Yes, audio and visual communication, so you have some resources like I having one laptop, yes, a phone, a internet to send the video to yours. So we have some resources for this type of communication, so it is much expensive than any other communication. The process of communication up with the visual aid such as video, chart, diagrams or map, it is expensive and much may require involvement of more pupils. Yes, वीडियोस कोई और बनाएगा, चार्ट्स कोई और डिज़ाइन करेगा, डायग्राम्स कोई और बता सकता है, उसको कोई और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकता है. तो ये भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत पड़े. यस, सो वी हैव सम मोर पीपल्स. जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ पर मैं अगर मैं वीडियो को बना नहीं सकता या मैं ऑडियो मर्ज नहीं कर सकता हूँ या फिर मैं कुछ भी मैनेजमेंट अगर मुझे लग रहा है वो मैनेजमेंट में नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कोई एक दूसरा व्यक्ति भी चाहिए, दूसरा बंदा चाहिए सबको मैनेज करने के लिए. तो उसमें क्या हो गया, वो उसको भी मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, वो भी उसमें कुछ हेल्प करेगा. तो दिस इज व्हाट, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. यस,
So moreover, the mode and area of the display are costly. हायरिंग अ टेलीविजन स्टेशन, न्यूज़पेपर और मैगजीन, हमको ये सब चीज़ें भी उसमें हायर करनी पड़ सकती हैं. सो सिंपली इट इज़ एक्सपेंसिव. द नेक्स्ट, all the topics cannot be represented at once in a single visual ad. Yes, so this is the really disadvantage of visual ad, because in such a way I am also doing up and down the PDF. Yes, for represented the topics. Yes, मैं भी स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही स्लाइड में सब कुछ नहीं दिखा सकता हूँ आपको. तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मैंने इसको पहले आपकी बुक से मैंने कन्वर्ट किया है इसको PDF में, देन उसको मैंने लैपटॉप में सेव किया है, उसके बाद फिर मैं ये सब प्रोसेस कर रहा हूँ. तो ये क्या है, लेंदी प्रोसेस है. यस, और मैं एक ही विजुअल एड में इतना सब कुछ नहीं बता सकता. मैं एक ही वीडियो में सारा चैप्टर क्लियर नहीं कर सकता हूँ. यस, इसीलिए तो वी हैव टू मेक सम lengthy video. So all the topics cannot be represented at once in a single visual aid. Next, in most cases visual communication is incomplete and incompetent if it is not accompanied by oral communication. Incompetent means you don't have some ability to do that work. Yes, you don't have ability to do that type of work. So this is called the incompetent. Yes, इनकम्पिटेंट मीन्स लैकिंग एबिलिटी. यस, एबिलिटी कम होना या उसमें डिक्रीजमेंट होना. सो इन मोस्ट केसेस विजुअल कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट एंड इनकम्पिटेंट इफ इट इज़ नॉट अकम्पेनिड बाय द ओरल कम्युनिकेशन. वो उतना इफेक्टिव नहीं होगी अगर उसमें ओरल कम्युनिकेशन भी ऐड नहीं करेंगे अगर आप, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगी. क्लियर? Then last, visual communication is more time consuming. A lot of time is required to create a visual ad. Obvious सी बात है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे समथिंग 1 hour मुझे एक्स्ट्रा लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए. तो सर यस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग. सो these are the advantages of disadvantages of the visual communication. So there is the step. This is the last topic of your chapter. In our next video we will discuss the question and answers. I will give you the answers of that particular questions. Clear? Okay, till then, stay safe, stay home.